Hi everyone, welcome back to my channel Living by the Word Sabrina Speaks। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जंग की कि अगर ये नहीं होती तो मैसाया की जो लीनिएज है वो कभी पूरी नहीं हो पाती। Did you know there was this one queen who wanted to kill all the baby boys of Judah? लेकिन द करेज ऑफ दिस वुमेन स्टॉप्ड हर। तो आइए आज हम बात करते हैं अबाउट दिस वुमेन हुज नेम इज़ यहोशेबा। Yehosheba is one of those hidden gems of the Bible, mentioned in 2 Kings chapter 11 and 2 Chronicles chapter 22. She was a daughter of King Jehoram and she married to the high priest called Jehoiada. लेकिन ये वो जेहोइदा नहीं है जो अभी हमने स्टोरी ऑफ बेनिया के अंदर उसके पापा की बात करी थी जिसका नाम भी सेम था जेहोइदा, बट दे बोथ आर different. So just wanted to make sure कि आप confused ना हो. Her bravery wasn't just about saving a baby, but it was about saving God's promise to David. So now let's study the background. King Ahaziah of Judah was killed. His mother, Queen Athaliah, wanted the power so badly that she murdered all the royal heirs to make herself queen. ये हम पढ़ते हैं 2 Chronicles chapter 22 verse 10 के अंदर. So she destroyed all the royal family of the house of Judah, but one baby, Joash, was hidden away. But उसको छुपाया किसने? And that was Yehosheba. In the middle of the bloodshed and chaos, she risked her life, sneaked into the nursery, took the baby and hid him for 6 years. तो आइए अब हम पूरी स्टोरी जानते हैं कि एक्चुअली में यहोशेबा कैसे एक हिडन रेस्क्यूअर बनी। Yehosheba was a brave and courageous princess of Judah. She was the daughter of King Jehoram of Judah and the sister of King Ahaziah. During a very dark time in Judah's history, Athaliah, her mother-in-law, came to power after killing almost all the royal heirs to take the throne for herself. और ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे आप फियर और केओस दोनों देखते हो, where the rightful king's line was about to be completely wiped off. लेकिन यहोशेबा यहाँ पे चुप नहीं रही. शी वॉज नॉट स्केयर्ड, शी वॉज नॉट अफ्रेड, बट उसने क्विकली एंड वाइजली एक्ट किया. शी सीक्रेटली टुक जोआश, द इन्फेंट सन ऑफ किंग अहाज़िया, और उसको टेम्पल में छुपा दिया फॉर 6 years. वी रीड दिस इन 2 Kings chapter 11 verses 3 and 4. जब उन्होंने ये किया तो obviously she protected the future king and God's plan for Judah's kingdom. उन्होंने जेहोइदा के साथ साथ मिलके काम किया. Now Jehoiada was the priest who raised Joash safely and taught him about God. Yehosheba की courage was not just about hiding a child. It was about standing for God's plan even when danger was all around. उसने अपनी जान पे खेल के अथालिया को अपोज किया, जो कि एक रूथलेस क्वीन थी जो एक्चुअली में किसी को भी मार देती, किसी को भी थ्रेटन कर देती. बट बिकॉज ऑफ यहोशेबाज बोल्ड एंड फेथफुल एक्शन, जोआश इवेंचुअली बिकेम द किंग and the rightful line of David continued. Her actions helped to restore justice and God's kingdom in Judah. So now let's understand the 5 lessons that we learned from this woman called Yehosheba. First, courage in the face of danger. यहोशेबा ने अपनी लाइफ को रिस्क करी, जोआश को प्रोटेक्ट किया. शी स्टूड फॉर द राइजियसनेस, ऑब्वियसली पर्सनल रिस्क के साथ, बट गॉड ऑनर्स सच करेज. सेकेंड, गॉड वर्क्स थ्रू ऑर्डिनरी पीपल. और ये वाली लाइन हमने पहले भी इतनी स्टोरीज में पढ़ी हैं जहाँ पे गॉड यूजेस ऑर्डिनरी पीपल to do extraordinary works. इसका decisive action ऐसा था जिसकी वजह से eternal impact हमने देखा on the kingdom of Judah. So sometimes God's plans advance through hidden and faithful people. Third point, faithful action preserves God's purposes.
जब उसने जोआश को छुपाया, she ensured that God's covenant line through David continued. छोटी सी एक्ट थी फेथफुलनेस की, but she preserved God's greater plans. Number 4. Strategic wisdom matters. यहोशिबा acted wisely जब उसने टेम्पल के अंदर उसको छुपाया, a place that अथालिया would not easily search. तो यहाँ पे courage तो है ही, लेकिन wisdom भी हम देखते हैं, that wisdom leads to effective action. And last point, number 5. God rewards righteousness quietly. उसने कोई recognition नहीं मांगा, but her actions became pivotal in restoring God's order in Judah. So this was indeed an encouraging story for you and for me. और ऐसी ही एक स्टोरी अगर आपको याद होगी तो मेरी सबसे पहली वीडियो शिप्रा और पुआ की भी थी. Those two midwives were also very brave and courageous. उन्होंने भी अपनी wisdom use करी and did the same, made sure to save the babies. और यहाँ पर भी हम देखते हैं this woman Yehosheba, she used all of her wisdom and courage to save this baby named जोआश, जिसकी वजह से हम एक्चुअली में मसाया तक पहुँचते हैं, न्यू टेस्टामेंट तक पहुँचते हैं. हर रोल इज़ अगेन अ पिवटल रोल, लेकिन ऑब्वियसली एक हिडन कैरेक्टर है जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते. सो जाने से पहले एज ऑलवेज मैं आपको बताती हूँ एक अमेजिंग hidden fact, the bonus fact that we should know about this woman Yehosheba. Hiding Joash in the temple was even more remarkable. पता है क्यों? क्योंकि women were generally not allowed inside the temple, especially in the areas जहाँ पे हम sacred rituals को देखते हैं Old Testament के अंदर. Normally priests had the access and the temple was considered a male dominated sacred space. तो जब वो जोआश को वहाँ लेके गई, Jehosheba did not only broke the cultural and the social norms, but also she showed incredible courage and faith. She trusted God completely. Using his holy dwelling as a safe place, उनके temple को as a safe place उन्होंने रखा to protect the future king. She risked herself to ensure God's plan for Judah would continue. And that was it for today. लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. मेक श्योर जब आज आप सोने जाएं तो गॉड से ज़रूर से पूछे, what is he calling you for? What is your purpose? What should you preserve? What should you take care of? What is your role with him? Make sure you know your purpose with him. And whenever God reveals that to you, make sure you write it down in the comment section. चाहे वो एक ही लाइन क्यों ना हो. Indeed, that is important as well, because हमें पता चलेगा what is God speaking to this generation, what is God planning for this generation. So make sure you write it down in the comments because I really want to give it a read. So thank you so much for watching this video till the end. I'm sure you were blessed by this. I'll see you next time. तब तक के लिए God bless you.